it's over to you. Thank you. Okay, so I received these video clips and I'm very happy कि आप लोगों को जो important points कल बताए थे, most of you have taken care of it. And you know, the physical stance is very good. And so I'll go through one by one so that आप लोगों को ये हो जाएगा. We start with चिंतामणि. अब चिंतामणि in the beginning आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आपका एक हाथ, you know, you watch your this thing. So there was that. The other thing is कि आप किसकी तरफ देख के बोल रहे थे ये नहीं समझ में आ रहा. You should be looking in the camera, because when it's being recorded, जो अपन ने eye contact बोला था, ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो समझ में नहीं आ रहा. But I think you are looking at the photographer and not in the camera. So just check that out. Otherwise, it's quite good. And then Mr. Dr. Barodia, Mr. Barodia from Nasik, आपने दोनों खिसे में हाथ रखे हैं और पैर में चप्पल नहीं है, जूते भी नहीं है. अब ड्रेस अप्रोप्रिएटली बोला था ना, ये अच्छा दिखता क्या? आप देखिए खुद ही, दोनों हाथ आपके पॉकेट्स में है, ट्राउजर के पॉकेट्स में. It doesn't look good. It looks very casual. Are you here, Mr. Bordia? No, Prafulji, he already informed that he will be in traveling, sir. So we inform those comments to him. Please do, because otherwise he's got a very good personality and there is a certain pleasantness in him. But this hand position is bad and the नंगे पैर जो खड़े हैं ना, वो बराबर नहीं है, उससे वो खुद में भी नहीं आता है. You know, when you dress up, your self-image improves. The next is Mr. Pankaj Shah. Are you here, Mr. Shah? Good morning, friends. Happy Sunday to all of you. I'm very glad to inform Are you here? Yeah, Pankaj is here, sir. Yes, sir, I am there. हाँ, तो थोड़ा आपका चेहरा जो है वो फैन के समान ऐसा ऐसे जा रहा है. आप इसको ऑब्जर्व करिए. मेरा आई कांटेक्ट ऐसा मतलब ये नहीं कि आप मुंडी को ऐसे 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 करो कॉन्स्टेंटली. The other thing is Sunday casual है, तो you are wearing that jersey, nice bright yellowish green jersey, which is good. But when you're giving a speech like that, for starters, ना avoid all these kind of things. Okay. आपके अंदर भी एक अलग फीलिंग आपको महसूस होगा when you are not so casual. Otherwise, it's quite ये you have वो delivery में तो बाद में जाएंगे. But as far as the physical stance is concerned, this is one thing I thought. Good morning, friends. Happy Sunday to all of you. Let me just see. I'm very glad to inform you that I will be taking up the presidentship of Rotary year 2022-23 of Rotary Club of Jalgaon. I am Dr. Pankaj Shah, President-elect, Rotary Club of Jalgaon. Quite good. Otherwise, quite good, except for the fan kind of movement of the neck, which you should be careful about. Yes, sir. Next gentleman is Prem Kishore Chandak ji. अब देखिए चांडक जी, आपने क्या किया है, हाथ को ऐसे किया है, ऐसे, या फिर आपके फिंगर है ना वो ऐसे ऐसे हो रहे स्पीच में. नोटिस किया क्या आपने? नोटिस किया, मैंने वीडियो देखा तब नोटिस किया मैंने कि हाँ गलती हुई. और एक बार गर्दन पूरी घूमी थी, फिर से वापस आई, तो आई कांटेक्ट के वजह से किया था, बट वो करेक्ट नहीं था. नहीं, तो मेरा मुद्दा आपको समझ में आ गया है. आई एम वेरी हैप्पी. इसका ख्याल रखिए, ये हैंड ऐसा रखने से ये उंगलियां खेलने लगती है. आप जानबूझ के नहीं कर रहे, ये सबकॉन्शियसली होता है. जैसे वो लूज पैर अगर रहा तो वो पैर हिलता है ना, वो भी सबकॉन्शियस होता है. यू डोंट डू इट डेलिबरेटली, इट हैपेंस. सो वी हैव वीडियो देखने के बाद पता चला. ओके, वेल नेक्स्ट इज हाँ, मिस्टर लाल, आपने भी पैर नंगे पैर खड़े हैं आप, वो अच्छा नहीं दिखता in terms of ये. It should always be, you should be wearing some footwear appropriate. और दूसरा, आप बहुत सीरियस है. Are you a serious person basically?
बहुत सीरियस है आपका. Is here? No, I don't think sir is here. I couldn't find him. We'll inform him, sir. बहुत सीरियस. Okay. This Charpe, young man from Ballarpur. Charpe, तुम बहुत डरते हो. इतना डरो मत. पूरे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ये वो बड़ा कड़क है और ये होता है. अच्छी पर्सनालिटी है. रिलैक्स होके बोलना. So next time when you do, just be very relaxed. Don't be so tense. You're very tense. पर चरपे की एक बात अच्छी है कि वो कैमरा में देख के बोल रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि भैया हमको बोल रहा है. He is not looking elsewhere, which is very nice. Are you here, Charpe? No, sir. He's also not there, but he will see all these comments on YouTube. Okay. This lady Aparna Maravar from Nasik Smart City, very nice. I was quite impressed by her delivery. Though there is a little this thing in the, but good. As far as the physical stance is concerned, all those things that we talked about yesterday, she's done it well. Thank you, sir. Thank you so much. Oh, you're here. Okay. Yeah. Yeah, good. Then Sachin Gadodia. Jai Gajanan. So, आज की साप्ताहिक मीटिंग में सभी रोटरी मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं. दोस्तों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है. इस उपलक्ष्य में शेगांव रोटरी क्लब की ओर से डायबिटीज से कैसा बचा जाए इस विषय को लेकर एक सेशन का आयोजन किया गया. थोड़ा सा एक चीज हो रही, आप भी नंगे पैर खड़े हैं. और वो उसमें क्या होता, कई एक दो बार आप ऐसे जंप मारे हैं. हाँ सर. वो क्यों होता है? बिकॉज वो नंगे पैर खड़े हैं. अगर शूज पहन के रहते थे तो यू वुडंट हैव जंप्ड. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अच्छा है आपने ये किया, बट मेरे को लगता है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग इन, जब ये कैमरा का रिकॉर्डिंग होता है ना, तब कैमरा में देख. ओके. आप साइड्स में देख रहे थे तो क्या होता है, वो आई कांटेक्ट नहीं मिलता है. ये ध्यान में रखना. मैं ये तो जनरली अपन पब्लिक स्पीकिंग का बोल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, but this is just an input. But you've done well otherwise. Thank you, sir. Then Dr. Shah, Darshana Shah, very nice. Dr. Shah, बहुत अच्छी से किया आपने. मेरा सिर्फ एक इनपुट है कि ये जो गाउन आपने पहना है, ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा. बाकी बहुत अच्छा है. Then Ajay Yadav from Nasik. Ajay summed up yesterday's this thing. Hello everyone. Good afternoon. I'm Advocate Ajay Yadav. I'm the Quite nice. I hope you are enjoying your Sunday as good as I am. एक चीज बोलूं क्या अजय, आप बोले Yes, sir. यू आर एंजॉयिंग योर संडे, पर आप खुद बहुत ही सीरियस लग रहे हैं. यू आर नॉट एंजॉयिंग इट योरसेल्फ. ना? Okay. So take care of that, because that's very important. You know, it should be seen. What you're talking should be felt by you as a speaker. You know? Yeah. That will make a lot of difference. But Yes, sir. otherwise good. And ये थोड़ा आपने कैमरा नीचे लिया. It should Yes, have, yes. yeah, why? Because recording में My videographer was not. Yes. My तो वो- videographer was not trained. Oh, okay. Then this is सम्माननीय रोटेरियंस, Prakash Raolani, Shegaon. मैं रोटेरियन जी सर. यस सर. एवं प्रभु श्री राम देखो पता चले कि ये मैनुअल है, फिर आपको ऐसा There's a disturbance, please. हम सबको Can you mute everyone? लीडर बनना है. I have muted him, sir. आज मैं प्रभु श्री राम एज अ लीडर इस विषय को मैं आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ. प्रकाश जी, आपका भाषण बहुत लंबा हुआ. एक तो 1 ही मिनट बोला था, आप 2 मिनट के ऊपर बोल रहे हैं. पर कंटेंट अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है.
But your physical stance wise, you've understood the point, and so I'm happy about that. Naresh. Thank you, sir. EG 2223, Anand Bhai, IPDE, Shafir sir, district officers, and all my fellow Rotarians. A very good evening. Myself, Rotarian Naresh Bhagwan, President-elect 2223, Rotary Club नागपुर शहर में आप लोगों के समक्ष अपने क्लब के बारे में चंद बातें करने आया हूं। ईयर 2001 में स्थापित ये क्लब मात्र 29 से शुरू हुआ। आज डिस्ट्रिक्ट 303 सबसे बड़ा क्लब with 268 members है। ईशान्य नो अल्कोहल, नो नॉन-वेज, नो टोबैको पॉलिसी क्लब है। शुरू में जब यह क्लब स्थापित हुआ तो मैक्सिमम रोटरी क्लब सोचते थे कि यह क्लब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यदि इस क्लब को चलाना है तो उन्हें अपनी पॉलिसी में बदलाव करना ही होगा। आज मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए ईशान्य जिस ऊंचाइयों पर। अब नरेश जी आपके आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉम्प्लीमेंट्स कि आपने माइक भी लिया, यू आर प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर गिविंग द स्पीच व्हिच इज अप्रिशिएटेड, and this paper in the hand thing doesn't create a good impression. वो podium नहीं था तो I can understand that, but otherwise in physical stance you've done a very decent and nice job. So I think the point has been driven home on what are those important things. So इसको बनाए रखिए. That's it. These were the ones which were received by me. So Anand, can we move on? Yes, sir. Okay. So I'm sharing the screen. Sir, screen sharing takes some time, so just stick with it. Okay, okay. But it's not coming. Whiteboard आ रहा है यहाँ पे, iPhone. शेयर स्क्रीन होगा सर, लेफ्ट साइड में अपर मोस्ट। हाँ स्क्रीन है, डेस्कटॉप। हाँ तो स्क्रीन को सिलेक्ट करिए और नीचे शेयर का बटन है नीचे। हाँ, हो गया yes, सर, we can see, स्क्रीन शेयरिंग हो गया we सर। can see the screen. अच्छा, 1 second. Now, from today for the next 3 days, we'll be working on the content of a speech. किस भाषण क्या होता है? और we all know कि एक भाषण में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है भाषण की, और एक कंक्लूजन होता है। अब कोई लोग शुरुआत ही इतना इंटरेस्टिंग करते कि ऑडियंस उनके ग्रिप में आ जाता है पहले 2-3 सेंटेंसेस में, पहले 2-3 लाइंस में। दी एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है इंट्रोडक्शन में। और टिपिकली हम लोग क्या देखते हैं अपने रोटरी में, खास करके एकदम यू एड्रेस and then you recognize the dais, the president वगैरह, and then you start with your speech. So it is, I am standing here before you to give a vote of thanks. So people know because the president has said that I asked so and so to come and give a vote of thanks. तो ये बोलने की जरूरी है क्या? कोई भी भाषण में आपको ये ध्यान में रखना है कि you have to make it very interesting. So making it interesting is the biggest challenge in public speaking. और वही आइडिया को मैं अच्छे रूप से, अच्छी तरीके से कैसे लोगों को बताऊं, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमको करने जरूरी है। अब लेट्स से आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस आनंद झुंझुनवाला, हु इज द गवर्नर ऑफ द Rotary district. So what are the various ways in which I can start my speech? Let's brainstorm. ये वर्कशॉप है, सब जन पार्टिसिपेट करिए प्लीज। Sir, to be a leader, you need to have vision. And who better than an ophthalmologist to lead the district? Very good. Who's this? Shabir. Shabir. Oh, Shabir. Shabir, you are not allowed to enter. Someone else, please. The young trainees who want to improve, I want them. Shabir is a good orator. Can I speak, sir? Of course. आनंद, जैसा नाम वैसा ही व्यक्तिमत्व, चेहरे पर रौनक
और जहां जाते हैं वहीं आनंद फैलाते हैं। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये someone else? हेलो। हम्म। हाँ सर, आज के हमारे डीजी से आनंद झुंझुनू। You need to unmute yourself. शुक्ला जी अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ ठीक है, आया। हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। आज के हमारे डीजी श्री आनंद जी झुंझुनवाला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट 303 उन्हें सभी लोग अच्छी तरह से और उनके काम से और उनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो फिर आप क्यों खड़े हैं बोलने के लिए? सर may I? Yes. Here I will introduce the great personality, Mr. Anand Jhunjhunwala. Okay, that is what we is standard. आप ये बोलने से इंटरेस्ट मेरा डेवलप नहीं हो रहा, because I don't know Anand, I am not able to share with you. But Shabir, can you give us some aspects of his personality before you take the name Anand Jhunjhunwala? Yeah, as his name goes, he's a very happy-go-lucky man, very young, open to change always, and never, crosses path with people. I don't think there's a single person in the district who thinks badly about him. Very amenable, very approachable, an ophthalmologist, a family man. Okay. Yeah. And loves to live life, and it can be seen in every action of his. Okay. Yeah. All these parts, some of them you can work on it and make it interesting. That lady who said कि वो एक अच्छा तरीका है करने का। मनीषा राठी ने बोला। अब मेरे को एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब मिला था रोटरी में 2013 या 14, I'm not exactly remembering, when I was asked to introduce the topic which was given to Rahul Bajaj. He was the keynote speaker that evening, and I was asked to introduce the theme. अब मैंने पूरा, my whole bhashan was only introducing the theme, and so I'll share with you that bhashan just as a namuna. It's not that it's an ideal thing or something like that, but just check this. Are you able to see? Yeah. My introduction to the theme Bidar Indian Economy, a talk by Rahul Bajaj organized by Rotary Club of Nagpur, Persistent Auditorium 2013 की बात है. The Indian economy was in real doldrums, people weren't knowing. So now see the way I did this. And why I'm sharing this with you, because Rahul Bajaj himself came forward and said to me that he really loved this talk. And audience also, of course, said that liked it. But see the way I have approached this subject in a very different way. So can somebody volunteer to read? Shabir, would you like to? Okay. Acha. I will read it. Mr. Who wants to read it? Ajay Zada. I will read Okay. it. Yeah, Ajay. Yeah, I'll start with the. It's beautiful weather in Nagpur these days. Yes, it's beautiful weather in Nagpur these days. My morning walks are just tranquil, listening to the birds singing, breathing in the clean, fresh air. But suddenly, there is this group of senior citizens. I'm also one technically, but these are real senior citizens. And their spirited discussion is about how the country is going to dogs. Everything is so bad: scams, murders, theft, rape, and accidents. The country is going bankrupt. 5% growth rate. Chichi. What a shame for a PM who is supposed to be an economist. Then I heard an interesting comment. But our economy must be doing well. Just see the size of the scams. 140,000 crores. 60,000 crores. Imagine benefit of the giver of these bribes. Must be at least tenfold. Now, doesn't this make Bofors look real chiller? And then comes the cliched comment. God alone knows where this country is headed. I try to get back
to some sublime thoughts and soak in the Mangalmay Pahad. Mangalmay Pahad. And there comes this group of ladies. Discussion is servants' problems, inflation, substandard quality, etc., etc. And then comes a very studied question. पर मेरी समझ में ये नहीं आता. All jewelry stores are crowded, restaurants are full, weddings are lavish can be, and लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? And then one of them says, God alone knows कहाँ से आता है. Dear God, what can they attend to these concerns a little later and enjoy this beautiful morning? Okay, I beg your pardon. Why cannot they attend to these concerns a little later and enjoy this beautiful morning? Then come the spirited group of youngsters. They walk past you in such speed, almost giving you a complex. And lo, what are they talking about? Share market, real estate prices, cricket, latest lafra of some living rich. Lafra of some local rich, and of course, the present state of economy. Montek Singh is living in a fool's paradise that a man can live in rupees 52 per day, whatever. अबे मैं तेरे को बताता हूँ, ये situation और बिगड़ने वाला है. We will become slaves again. We will lose our economic freedom. God alone knows what is in store for us, young Indians. Fed up, I cut short my walk and return home, and sipping hot tea, take a look at the morning papers, and what's there? You know well. Now even I start asking the question, God, what is my country's economic future? Talking to God hasn't been possible yet, but a Gyani Pandit who has seen it from the top and has acquired a first-hand mature experience, someone who can certainly give us some insight that may clear many of these cobwebs in the mind, is right here. Who could be better than Hamara Bajaj? Sir, we are eagerly waiting to listen to you. Ladies and gentlemen, Shri Rahul Bajaj. Now this introduction is actually an introduction to the theme and to the speaker, Rahul Bajaj. But I have come to Rahul Bajaj only at the end because he was too well known. There's no need for me to say he was educated here, he was born there and stuff like that. So basically I dwelled on the theme and this is how I introduced that theme. Now what happened is people for the first 3 paragraphs were looking and, it all depends on your delivery, but looking and appreciating कि ये क्या बोल रहा है, विषय कहाँ पे जा रहा है. Then I brought it to that. I wanted to share with you as one of the ways in which an introduction can be made interesting, but this is too long because it is a theme introduction. And I was given 5 or 7 minutes. कितना मिनट लगा अपने को? आपको अभी 5-7 मिनट लगे होंगे. So that was the time which was given to me, and delivery पे depend करता है that how effectively you do that. Any comments on this? Any questions? Anyone? Sir, Yeah. there are usage of some slang words in between. Yes. How appropriate is that? Even though it gives a lot of effect, I do agree. But how appropriate is that in a very, very formal function? It is not appropriate. However, to make my speech effective, I took that liberty because, Shabir, it entirely depends on how you use that and how you deliver that. Okay, sir. Now, for example, Bofos looks like chiller. You have used chichi also, chiller also. And वो अबे वाला जो है ना, that I did not say अबे because I thought it was not, it is in the text, but while delivering I never said. मैं तेरे को बताता हूँ अबे, मैं तेरे को बताता हूँ था पहले, but I didn't say the अबे part. Sir, a small point. Now, a person of your 2 things, your stature already established in Nagpur and your age, seen as a very senior person. Is it easier for a person like you to get away with this? Yes, yes. And suppose it were to come from a younger person. Yeah. Anytime. But Shabir, I would.
So we need to be more choosy if we are younger in age. Because I took that liberty. But one thing is very important, that sometimes, you can, there are ways of conveying the same meaning without using the words. Which you will, there was a very renowned speaker, Pula Deshpande, in Marathi. And Pula Deshpande, when it came to bad words, used to say phulya, phulya, phulya. Phulya means cross. He didn't use the bad word, but he would say phulya, phulya, phulya. And the audience would be in splits because they knew exactly how many phulyas, and so what did he mean to say? So that was also one of the ways of doing it. But here I'm not so much talking about the content in terms of but I'm saying how you approach a subject, the introduction to a subject. That's my there are ways and ways in which you can think of a subject. So coming back to Anand Jhunjhunwala, if anybody knows him well, can you introduce Anand now with a little different approach in terms of, like Shabir, you quoted so many qualities of Anand, that is a good thing. But a little background of Anand, or there was one I had heard, one gentleman said, our district governor is here. Look at him. He looks educated. Look at him. He looks very poised. ऐसा कर करके उन्होंने किया, and then he said that I have great pleasure in introducing. Will somebody like to read that lady who said Anand hai? Can you say it again? थोड़ा सा बड़ा करके. Anisha ji. Yes, sir. So I'll just give a try. Yeah. आनंद जैसा नाम वैसा ही व्यक्तिमत्व, चेहरे पर रौनक, और जहां जाते वहां खुशहाली साथ ले जाते. Actually, happiness personified. A family man, life current, and takes everybody along wherever he moves. Okay, Manisha, can you add a little humor to this? Can you say that I know his wife very well, and she also says that my husband is Vakei Anandi? Profession well. You see, क्या audience love humor. और वो कैप्चर करते वक्त ना पहले 2-4 सेंटेंसेस में अगर थोड़ा सा लाइट मोमेंट आपने डाला, तो आप देखिए ऑडियंस आपके बिल्कुल स्पीच को ध्यान से सुनेगी. तो थोड़ा सा आनंद जैसा व्यक्ति वैसा, क्या बोले आपने? वैसा नाम वैसे नाम, हाँ, वैसा ही व्यक्तिमत्व. और खास बात तो ये है कि उनकी बीबी भी, उनकी वाइफ, उनका जो कुछ नाम है वो आप अगर जानती है, तो वो भी ये कहती है कि वाकई मेरा मियाँ बहुत आनंदी है. वेरी रेयर. I mean, I'm just saying, stimulate the mind to get a little lighter and a little more good. तो है, अभी अच्छा बोलना ही है, तो थोड़ा सा उसमें खींचे भी तो अच्छा लगता है, and audience love that kind of thing. So the introduction has to be made very interesting, and you get an opportunity in the first 3 or 4 sentences only. So can you look at? बोलिए संग्राम सिंह जी. नमस्कार. आनंद नाम सुन के मुझे राजेश खन्ना का वो पिक्चर याद आता है, और उस पिक्चर में का एक डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. और उसी बड़ी सोच और विजन के साथ हमारे बीच मौजूद है खामगांव के मशहूर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और हमारे होने वाले नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आनंद झुंझुनवाला. वो अपनी इसी तरह से शुरू करूंगा. So there are different ways of approaching it. For example, now we have introduced a person. Let's go to introducing a topic. And what is your Rotary for this year, for the new year? International की क्या थी? Imagine Rotary. Imagine Rotary. Imagine Rotary. Doesn't make much scene. Actually, you guys are experiencing Rotary now. Why imagine? But no, can you give us something else?
which currently Rotary's got as a major emphasis theme or something? Maybe current year theme, serve to change life. Serve to change life. Okay, this sounds a little better. So why, please, somebody other than these people who volunteer to introduce the theme. You are the speaker who's going to talk about the Rotary theme of the year. So how will you introduce this? The volunteers? Anand, jara hunter घुमा भाई. Yes, sir. Yes, maybe Sachin, you can try. फिर से रिपीट कर दीजिए थीम. Serve to change lives. Serve to change lives. इसका हिंदी अनुवाद होगा सेवा के द्वारा जीवन बदले. जीवन बदलेगा कि जीवन बदलाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही? आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्चुअली. सो सेवा करिए, जीवन में बदलाव लाइए, है ना? So you can introduce the theme in Marathi, Hindi or English. I'm fine with any. Will volunteer. ओके, जिन्होंने वॉलंटियर कर चुके हैं फिर से दोबारा करने की अगर इच्छा है तो जरूर करिए. मंजू, would you like to try? Yeah, Manju, unmute yourself. You'll have to unmute yourself, Manju. You'll have to unmute. Yeah. Hello. Yes, we can hear some music. There's some background noise. Somebody is watching the TV. सर, मैं बोलूं? हाँ, करो सचिन. खुद के साथ रोटरी सर्व टू चेंज लाइफ, खुद के साथ साथ ही दूसरों की दुनिया में खुशियां भरने का मतलब सर्व टू लाइफ. नहीं सर, सचिन आपको समझा, आपको इंट्रोड्यूस पहले करिए टॉपिक. एकदम आप थीम पे ही आ गए. ओके ओके. सो यू ट्राई फर्स्ट इंट्रोड्यूस. यू नो वी सेड, अभी ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि स्पीच के 3 भाग है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अभी अपन इंट्रोडक्शन पे ही काम कर रहे हैं. आप ये थीम को इंट्रोड्यूस लोगों में कैसे करेंगे? सर्व टू चेंज लाइव्स. क्या वाकई होता है? Yeah, Manisha ji, go ahead. Serve to change lives. एक चाइनीज प्रोवर्ब कहता है, एक मोमबत्ती अंधकार को दूर भगाती है, और हमारा रोटरी कहता है, हर एक के हाथ में एक मोमबत्ती दे दो, अंधकार का नाम निशान लो. Serve to change lives. Come together to change lives and to change situations that run today. इंट्रोडक्शन के तौर पर सर यही सुन रहे हैं. ओके, एनीवन विचार करिए बिकॉज ये आई नो इट इज नॉट एन इजी थिंग. एंड सर्व टू चेंज लाइफ ये थीम है, एंड एज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द थीम एड्रेस, डू यू वांट टू स्टार्ट विद द थीम नेम और वुड यू कम टू द थीम नेम अ लिटिल लेटर बाय गिविंग अ एनेक्डोट? जैसे आप चाइनीज प्रोवर्ब की कह रहे थे, बट एक्चुअली रियल लाइफ कुछ इंसिडेंट बता सकते क्या? इस सर्व से चेंज हुआ और ये हुआ, एंड दिस इज व्हाट इज दिस ईयर्स थीम.
Yeah, Pankaj, try. Good evening, all of you. As you all know, every year Rotary comes out with one theme where we all Rotarians are following that theme, and it has been given by the Rotary International President. So friends, this year the theme is Serve to Change Lives. You may be aware there is one proverb or word Ubuntu, which is widely used in Africa. Ubuntu means we are here because of you. So friends, the motto of Rotary is service and fellowship. So Pankaj, don't get into the theme. I just want to know from you how you will introduce this theme to the audience in a gripping way by which the audience would find it interesting enough to listen to you. Sir, can I try? Yeah. So my name is Dr. Tejas Waghela. So I'll just try this, sir. If it's okay, just let me know. Yeah, so good evening, everyone. As I'm an orthopedic surgeon, I would like to share an anecdote. This is the time when I was studying back, and during my residency, I saw this young boy who came to the emergency room with a leg broken. He was a cricketer who could play the games. He was someone who everyone looked up to. And here I was as an orthopedic resident understanding how I could serve this patient better. And then I saw my senior telling me that we can make this patient walk in a matter of minutes after performing a surgery. So this was a time when I looked up to myself and said that there are certain ways in which we can serve people and make our lives as well as their lives better. I'm sure not only orthopedic surgery, but there are many other fields in which each and every one of you all can make the society's lives and everyone's lives better. And looking at this, our seniors in Rotary have told us to look and serve and make everyone's life better. Thank you. Good. Nice way. Now, in reciting the introduction, जब आप इसको actually लिखोगे, edit out that which is irrelevant. Come straight to the story. As a resident doctor, वहाँ से शुरू करिए. As a resident doctor, I had a unique experience of attending to ये वगैरह वगैरह वो जो कुछ है. And then drive to this. Therefore, this theme, serve to change lives. Yeah. Then you come. Sure. But a nice way of giving a. So now this is getting to the serious side of it. Can somebody think of a way in which you can make it lighter and come to the theme? The theme is very serious, but it can be even said, Shabir, you've got that knack in you. Why don't you try? Okay, I'll mix serious and humor and then come to that, sir. स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द है जो आज भी कान में गूंजते हैं. उन्होंने कई वर्षों पहले कहा था कि चलो हम सब मिलकर उस भगवान की सेवा करें जिन्हें कुछ नादान लोग मनुष्य कह के बुलाते हैं. We spend hours and hours of our life, the majority of our life, praying to God to change our lives, little realizing what Swami Vivekananda said and what is actually true, that the only way to change life is not prayers, but to change other people's lives. To serve and change their lives is only way to change our own lives. Thank you so much. Good attempt. Good attempt. और इसमें जब थोड़ा करोगे तो अपने आप ही आ जाता है, समझ में आता है कि इसको okay, I don't have to use this word, I can use that word, etc. Okay. So friends, sir, can I? Om Prakash ji. Yes. Vilas Bhau, one more person. I want more of you all to participate so that the concept is clear. How do I make my introduction interesting? Whether it is a topic, whether it is a person, whatever I'm doing, the introduction of my subject of the talk has to be very interesting. Om Prakash ji. Sir, I am Rotarian Om Prakash Rawat. I am member of Rotary Club of Nashik. जब हम सेवा को एक छोटे से शब्द को इस तरह से देखते हैं कि सेवा उन लोगों के लिए होती है जो अभावग्रस्त हैं, तो हम ये गलत सोचते हैं. मित्रों, हम सब लोग सेवा लेते हैं और सेवा की अपेक्षा करते हैं. क्या जब कोई आदमी हमें रास्ते
तो जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं, वो हमको सही दिशा में रास्ते का मार्गदर्शन करता है, क्या हमने उसको से सेवा नहीं ली है? तो सेवा वो शब्द नहीं है कि जो हमें हमेशा दूसरों को देना है। हम सब एक दूसरे के साथ सेवा के एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, और सेवा सिर्फ उनके लिए नहीं होती जो अभावग्रस्त है, सेवा उनको भी देनी होती है जो संपन्न है। क्यों कि सेवा सिर्फ अभावग्रस्तों को संपन्न लोगों के साथ नहीं जोड़ता, सेवा संपन्न लोगों से भी जोड़ता है। थैंक यू। Okay. In my thought, Nice, serve yourself. rather serious. Then you can. Just a bit later after Vilas Babu has analyzed it. ओम प्रकाश जी, यही इसी को आप जो कुछ आपने कहा आप लिख लीजिए और उसी पे विचार करिए कि इसी को मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग और लाइटर वे से कैसे लोगों को बताऊं। यस सर। क्या आप ये बता सकते हो कि आपके साथ में एक बार आप रास्ता घूम गए थे और किसी ने तो भी आपको मार्गदर्शन किया और ऐसे जगह भेजा जहां आप जाना नहीं चाहते थे? आप बोल रहे ना हम सेवा लेते हैं लोगों से, तो थोड़ा सा उसी पे खेलिए ना, play around that. Yes, sir. That episode in such a way that your audience is in your hand. अभी आपने जो कहा ये तो बड़ा सीरियसली कहा और लोग ये करेंगे, बट इंटरेस्ट कैप्चर हुआ क्या? सर मैं आज का जो है ना, मैं साहस नहीं कर पा रहा था कुछ बोलने का। नहीं तो मैं साहस जुटा पाया। अरे बिल्कुल साहस करना चाहिए, बिल्कुल सब सीखते हुए ही आए ना। मेरे को याद है जब मैं पहली बार, मेरे को हमारे टीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था, एक हमारा आर्ट क्लास का गेट टुगेदर था, 15-20 लोग थे और वो जिनको मैं अच्छी से जानता हूँ उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कहा गया। मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा गला सूख गया, सब हुआ। तो ये सब होता है, इसी से गुजरते हैं, इसी से तो हम उभरते हैं, है ना? तो नथिंग टू स्पीक अबाउट। या हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट जयेश वोरा। एंड तब तक के विजय लाठी जी आप आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। विजय लाठी जी, हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए। सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ, कैन आई स्पीक विदाउट कैमरा? Okay. So Jayesh Vora and then Vijay Lathi. Jayesh. Sir, very good evening. I'm Sir Rotary and Jayesh Vora, Rotary Central Akola. In my thoughts, serve yourself, then you can serve better to the service. Sorry, I'm not getting it clear. Sir, my thought is not clear. If we will serve to ourselves better, then only we can serve better to the service. This on the public, or we can give a better service to the citizens. So this is how you will introduce this. This is how you will introduce the subject. Serve ourselves to serve better to the citizens. Serve ourselves first before serving the citizens. That's what you're saying. Yeah, that's why if we are better to serve others, then only we can serve to the others. I didn't get this. I didn't get this clearly. Is this okay. You're saying in a lighter way? I mean, as a humor बोल रहे क्या आप कि अपनी पहले खुद की सेवा करो बाद में लोगों की करो, ऐसा करके बोल रहे lighter way में humorous कि you're seriously saying this? We'll come to him later. Vijay Lathi ji. हाँ. Vijay Lathi. Vijay Lathi. Yes, sir. हाँ. Am I audible? Yeah, loud and clear. Yes. Good evening, friends. रोटरी का उद्देश्य सर्विस और फेलोशिप है। हमारी कम्युनिटी सर्विस से हम किसी जरूरतमंद के जीवन में खुशियां ला सके तो हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट शेखर जी ने हमें इस वर्ष जो थीम दी है वो है सर्व टू चेंज लाइव्स। तो चलिए हम इसे डिटेल में जानते हैं। लाठी जी, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका हो गया इंट्रोड्यूस करने का और अच्छा है, इसमें कोई बुरा नहीं है, पर मैं जो चाह रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ आपको कि इसको आप और इंटरेस्टिंग तरीके से इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस पे विचार करिए। जी सर। हाँ जी सर, जरूर। ओके, नेक्स्ट हु इज देयर? आलोक। ऑडिबल? या, लाउड एंड क्लियर। रोटरी आणि सेवा ह्या दोन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत।
सर्व्हिस अबाव सेल्फ हा रोटरी क्लबचा एक ब्रीद वाक्य आहे. त्या ब्रीद वाक्याच्या माध्यमातूनच सर्व टू चेंज लाईफ ही नवीन थीम यावर्षी इंट्रोड्यूस झाली आहे. सेवेतून मानवाचे जीवन बदलणे आणि त्याचा उत्कर्ष करणे हे या ब्रीद वाक्याचे ह्या ब्रीद वाक्यातून आपल्याला हे सार्थक करायचे आहे. ठीक है सर, थोड़ा डरेवा हूँ लेकिन नाही, डरा नाही. तुम्हाला बेसिकली मी जे म्हणतोय ना ते लक्षात येत नाहीये असं मला वाटतं. काय माझं म्हणणं, आता तुम्ही हे जे म्हणताय की लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडवायचा सर्व्हिस करून, आता मला सांगा की लोकांसाठी तुम्ही काही लोक बदलतात का? जीवन बदलतं का? आपला अनुभव काय आहे? लोक बदलतात का? सांगून बदलतं का कोणी? हे वाईट आहे नको करू असं म्हटलं तरी आई वडिलांनी किती आपल्याला सांगितलेलं असतं, पण आपण बदलत नाही. पण सेवेतनं जेव्हा आपण तो बदलाव आणण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्या व्यक्तीवरती पण जो परिणाम होतो, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तुमचं इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग करा. हे स्टेट झालं किंवा रोटरीचं ब्रीदवाक्य आहे, सर्व्हिस अबाव सेल्फ आहे, हे आहे वगैरे. So this is the point I'm trying to drive home. Would somebody like to give it a try? Yes, sir. One more try, please. Yeah. Yes. Mitra Ajay Jadhav. Oh, okay. Yes. You got two names or what? Mitra Varun? No, this has been joined by my son's name. Okay. Okay. I will say, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि सेवा करने से हम अपना अभिमान छोड़ देते हैं, अपना गर्व छोड़ देते हैं. सच बात है, सेवा करते रहिए, आपका अभिमान, आपका गर्व धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी. सो सर्व टू चेंज लाइव्स, आपकी खुद की जिंदगी बदलने के लिए आप जरूर सेवा करते रहिए, रोटरी के माध्यम से सेवा करते रहिए. Okay. Should I make an attempt at humor, sir? Sir, may I try? Yes. Who's this? Rakesh. Okay. Rakesh Dindwania. Yeah. अंधों को भी विजन देने वाले, गूंगों को भी बोलता करने वाले, मोनिका भाभी के अलावा किसी के भी सामने बोलने से ना डरने वाले, सदा सभी को आनंद देने वाले, सेवा द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिलेट आनंद का परिचय करवाने जा रहा हूँ. वेरी नाइस. वो पहले क्या बोले, कौन? मोनिका से न डरने वाले. Monica is his wife, sir. Monica is his wife. I understood that. Yeah. मोनिका भाभी के अलावा किसी के भी सामने बोलने से ना डरने वाले. अच्छा, तो वो थोड़ा स्पीड, आपने स्पीड में बोला, उसको मजा लीजिए बोलते वक्त. अच्छा. वो अपन बाद में आएंगे उस पे. बट नाइस वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग. आई लाइक्ड इट. थैंक यू. Thank you. Yeah. This theme is a little too serious. I'm just raking my brains also to see how would I work on it if I was to introduce this theme and in the first few sentences make it very interesting. So one way what so Sabir did was about Swami Vivek. May I give one more try? Om Prakash Rawat wants to try. हाँ, try करिए ना. मैं एक छोटे से घटनाक्रम से मैं सेवा का मतलब कितनी छोटी छोटी कृतियों से उजागर हो सकता है, इसका एक उदाहरण पेश करता हूँ. मैं जब बंबई गया, मैं समझदार भी था, मैं पढ़ा हुआ भी था, मेरी जेब में पैसे भी बहुत आए थे, मैं रिक्शा कर सकता था, मैं टैक्सी कर सकता था. मैं जब 10:30 बजे ट्रेन से उतरा, मुझे 11:30 बजे अंधेरी में एक मीटिंग अटेंड करनी थी. मित्रों, जैसे ही कहा जाता है कि लोकल बंबई की लाइफ लाइन है, और जब मैंने देखा कि मैं लोकल चढ़ना तो दूर, वो एंट्री भी कर नहीं पा रहा हूं, और तब मुझे हड़बड़ाहट में देखते हुए किसी एक आदमी ने, जो वो मुझे जानता नहीं था, उसने मुझे मेरा हाथ खींच के जब लोकल में मुझे ले लिया, और जब 15 मिनट में मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, तो वो सेवा का हाथ आज तक मुझे याद है कि मैं उस बंदे की वजह से उस मीटिंग में पहुंच पाया, और मैंने जो हासिल किया उस मीटिंग से,
उससे मेरा जीवन ही बदल गया। मित्रों, यही है सेवा का महत्व। वेरी नाइस, गुड अटेम्प्ट ओम प्रकाश, गुड अटेम्प्ट। इतने शॉर्ट स्पैन में आपने रीथिंक करके किया। तो अभी हमको anybody else volunteering? Okay, shall we move further? Okay, so Shabbir bhai wants to try. I was just wondering if I can make an absolutely quirky, humorous attempt at it. Tell us. एक बार हम कुछ दोस्तों के साथ बॉम्बे में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हमारे बाजू में इंडिया के बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जी बैठे थे। जो वेटर उनके टेबल पे सर्व कर रहा था, उसने दिल खोल के अच्छे से अच्छा पकवान देके उनकी सर्विस की। आनंद महिंद्रा जी उससे इतना इम्प्रेस हुए, उसकी सर्विस से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे वहां से लेके अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के मेस का हेड बनाया। उस दिन मुझे इस फ्रेज का पूरा समझ में आया, सर्व टू चेंज लाइव्स। Very nice. And this man others will, you can change others' lives also. But very Rakesh Agarwal, आपका हाथ, you want to try? You're mute, Rakesh. You're mute. Unmute yourself. Good evening, all of your dignitaries, and thanks to आनंद सर, उन्होंने इतना अच्छा ये अरेंज किया इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाता हूँ हर जगह। एक्चुअली मैं सेक्रेटरी अभी अचलपुर से हूँ, मैं अचलपुर रोटरी क्लब ऑफ अचलपुर से। मैं एक्चुअली बहुत जगह घबराता हूँ, मतलब ये बोलने के हिसाब से, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं अभी बोलूँ थोड़ा सा कुछ रोटरी के बारे में। तो अभी घबराहट हो रही है क्या? दिल धड़क रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा। लंबी सांस लीजिए 2-3 बार, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। या ओके सर, एक्चुअली रोटरी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और रोटरी का मैं सेक्रेटरी इसलिए हुआ कि मुझे भी कुछ काम करने की इच्छा है, मतलब रोटरी में हर कुछ सेवा देना, ये करना। और इतने अच्छे अच्छे लोग जैसे डॉक्टर आनंद सर, और पिछली बार हमारे को डॉक्टर शब्बीर सर थे, तो बहुत कुछ सीखने मिला, और आगे भी यही चाहता हूँ कि सीखने मिले मुझे। और थैंक्स टू काले सर ऑल्सो, उन्होंने इतना अच्छा ये पब्लिक सेशन लगाया है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। थैंक यू। ओवर टू यू सर। एंड डोंट बी अफ्रेड राकेश, बिल्कुल गलतियां कर, और देखो गलती करने से कभी नहीं डरना। नो, देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु हैज नॉट कमिटेड मिस्टेक्स। या सर, सो नेवर हेजिटेट। अच्छा, दर्शना एंड देन प्रकाश। Oh, still some? Okay. Yeah. Thank you, sir. Rotary Pranam, sir. I'm Dr. Darshana. Am I audible? Yes. Yes. I would like to give some funny twist to the theme. I'll just try out. Yeah, try. Yeah. So I operated a gentleman in Zimbabwe whose wife brought him to me, and the next day when I opened his patch, he said, "Oh, this is not my wife. My wife used to be very slim." And there was this funny accident that his wife took him away, beating him, and said, "I won't be coming back for the second eye." So friends, I think this was a very different twist to my service to change life, and hope Rotary serves in a very nice way rather than this funny way. नहीं, इट्स अ नाइस एनेक्डोट जो आपने बताया ना, तो उसी को थोड़ा सा डेवलप करके ब्रिंग इट टू द थीम। ओके। तो वो दैट वाज नॉट हिज वाइफ, एक्चुअली शी वाज नॉट हिज वाइफ क्या? No, she was, they like Africa, they have 2-3 wives. So I am not sure, but it happens so that he said don't operate his second eye now. He was calling me fat. So you now how you bring it to changing lives through service, ये आपको विचार करना है, and you develop on this. It's a very good attempt. Yeah. Okay, so we done? Yeah. Ravlani was there. Prakash? Yes sir. जी सर, 2-3 सेंटेंस में ही। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको अभी 1 महीना पहले घड़ा हुआ एक किस्सा बताता हूँ। मेरे घर का काम चल रहा था, एक ईंट भट्टे पे गया मैं। वहां जाने के बाद
छोटी छोटी झोपड़ियों में कुछ 5 साल के 10 साल के ऐसे बच्चे खेल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि नहीं आज आपकी स्कूल नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला कि हम स्कूल नहीं जाते। वो मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन हमारी मीटिंग थी योगा योग से, फ्राइडे था। मीटिंग में आने के बाद ये विषय मैंने हमारी मीटिंग में रखा और सभी मेंबर्स ने मिलकर ये विचार किया कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन हम उस गांव में गए। वहां गांव में जाने के बाद वहां जो अपना जिला परिषद की स्कूल थी उसके हेडमास्टर से मिले और उन सभी बच्चों का दाखिला हमने वो स्कूल में कराया। 1 महीने के बाद मुझे 1-1.5 महीने के बाद वो ईंटों की डिलीवरी लेने जाना पड़ा। तो उस टाइम पे वो बच्चों का स्कूल जाने का टाइम था और उन्होंने स्पेशली मुझे आके और उनकी जैसे उनको समझ में आया, एक बच्चा बोले की दादा तुमच्यामुळे माझी लाईफच बदलली, माझी जिंदगी बदलली, खूप खूप धन्यवाद तुमचे। तो वो उसका वो सेंटेंस सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि है कि नहीं, हमें किसी की जिंदगी बदलने के लिए ही सेवा करनी चाहिए और सर्व टू चेंज लाइफ, यही हमारे इस साल का मोटो है और संदेश है जो हमारे डीजी सर ने हमारे इन्होंने दिया हुआ है। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नाइस प्रकाश, नाइस इंसिडेंट। एंड आपका ना चेहरे पे प्रसन्नता थी जब आप ये बता रहे थे, विच इज वेरी नाइस। सो इवन देयर वाज नो ह्यूमर इन इट, इट स्टिल मेड इट वेरी प्लेजेंट एंड पैलेटेबल। सो गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो इंट्रोडक्शन में जो विषय है वो विषय को शॉर्टली इंटरेस्टिंगली हमको कम्युनिकेट करना। फिर हम आते हैं बॉडी में कि एक स्पीच की बॉडी कैसी होनी चाहिए। अब टिपिकली क्या है कि आपके पास में मैटर कई से बार बहुत रहता है और उस मैटर में से सिलेक्ट करना पड़ता है। सो एक थंब रूल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं जो हर पब्लिक स्पीकर ध्यान में रखता है कि आपके 3 केवल मेन मुद्दे होने चाहिए बॉडी में। जो बॉडी है स्पीच का, उसमें केवल 3 मुद्दों पे आपने कंसंट्रेट करना चाहिए एंड देन अराउंड दैट यू कैन बिल्ड अप। So if there are, for example, if you are talking about what shall we say, 3 basic points should be there in a speech, which will be, for example, अभी जैसे ये इंट्रोडक्शन दिया था अपन आनंद झुंझुनवाला का। So मैं इंट्रोड्यूस करने के बाद में बहुत लाइटली इंट्रोड्यूस किया, जो सदैव आनंदी रहते, जो जिनकी बीबी भी कहती है कि आनंदी रहते, और ये बीबी से न डरते हुए बाकी क्या बीबी को छोड़कर बाकी सबसे डरते हैं, ऐसे आनंद। एंड देन इन द 3 bullet points, one will be about his family background, one will be about his education, and third will be about his service as a Rotarian and all that. So these could be the 3 bullet points. But when you come to a thing like this theme, serve to change lives, here कौन से बुलेट पॉइंट्स बनेंगे? 3। मैंने थीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में थीम के बारे में बोला। सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज इट टू सर्व एग्जैक्टली। जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा कि सर्व इज नॉट नेसेसरीली कि आप गरीबों की ही सेवा करो या वो अपन भी उनसे सेवा लेते हैं, ये होता है वगैरह, वो विषय जो। सो व्हाट इज सर्विस, दैट कुड बी 1 bullet point there. The second bullet point is who could be the target people. Third bullet point could be how do you actually do it through Rotary, and then you conclude. So introduction and body में 3 मेन मुद्दे, उन मेन मुद्दों के आगे पीछे आप कहानियां बताइए, एनेक्डोट्स बताइए, but do not bring in too many ideas या too many elements. People can't, ये logically हम thinking करते हैं और speech हमेशा logical होना चाहिए, illogical नहीं होना चाहिए। And after saying those 3 bullet points, your conclusion must be very effective. So you build it up and leave at a climax. कई से बार स्पीकर को समझता ही नहीं कि कब खत्म करें, चलते ही रहता, वही चीज खुद के आवाज के साथ में इतना प्रेम हो जाता कि वही चीज दोहराते रहता है। Repetition is boring, and so you must build up the speech to a pinnacle and a climax.
Now, typically they say your speech must motivate. Generally, unless it's a condolence speech or something like that. But normally a speech should motivate. So when the governor comes to you, his speech is motivating. Motivational speech रहता है, so that you will get more involved in Rotary. You will make contributions to the foundation and stuff like that. So there is motivation in that. Now, for starters, please write down your speech and go through it. After doing that, I'll tell you as we move on tomorrow or so how to take your notes, so that you have to refer, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता कई समय, तो वो कैसे रेफर करना नोट्स को, अगर अपन फिजिकली कल करेंगे उसको. अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन आज नहीं कर रहे अपन, कंक्लूजन पे और चर्चा करेंगे तरीके से, पर बॉडी पे आप लोगों को काम करना है. तो अभी इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, दीज टू पार्ट्स ऑफ इट, I want 4 volunteers for 4 different topics. Anand, will you choose them? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's think of the topics. Please join everyone in the selection of the topic. One could be the current crisis in Ukraine. Can we make speech on Russia versus Ukraine war? That's one. The second could be, what shall we say? Any current topic? Hijab ya kitab. Sounds good. Hijab ya kitab. Pakistan. Third? Pakistan. But Pakistan kya? Imran should have left. Imran Khan should have left gracefully. Yeah. सर कोविड है या चला गया? ओके, सो 4 टॉपिक्स मिल गए अपने को. अब 4 स्पीकर चाहिए, और वो स्पीकर से हमारी अपेक्षा ये है कि आप उसको लिखेंगे, एडिट करेंगे, और कल हमको सबके सामने में यहाँ पे सुनाएंगे. नो सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप, यहाँ पे एक्चुअली सुनाएंगे आपके. हम इवेल्युएट करेंगे इंट्रोडक्शन कैसा था और बॉडी कैसी थी. कंक्लूजन यू कंक्लूड एज यू वांट. लेट्स हैव 4 न्यू वॉलंटियर्स. Sir, I can write about Russia-Ukraine war. Okay, Parth. Anyone else? Sir, I will write on Ukraine war. अरे यूक्रेन वॉर क्या? अच्छा, 4 डिफरेंट चाहिए. हिजाब या किताब पे? हिजाब या किताब पे प्रेम किशोर चांडक. Anyone else? Somebody new? जोशी मैम. Yes, sir. Yeah. COVID. अच्छा, कोविड है कि गया? Yeah. ओके. और एक और वॉलंटियर. एनीवन? इमरान खान ने वो रह गया ना, इमरान खान शुड हैव क्विट ग्रेशियसली. निखिल? Sir, there is one more topic. If it's okay, can we add that? Okay, what is it? What topic? Of Krishi Bill U-turn. Ground truthing of Krishi Bill U-turn. I didn't understand. Sorry. Krishi bill, agriculture bill U-turn. The U-turn on the agri bill. Okay. Ground truthing of Krishi Bill U-turn. So ground reality आप बता रहे हैं उसकी? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, तो एग्जैक्टली क्या बोलेंगे टॉपिक? सर उसके प्रोज एंड कॉन. अच्छा, मैं प्रिपेयर कर रहा यूक्रेन इस पर. इफ पॉसिबल तो मैं वो भी ट्राई करता हूँ. नहीं देखिए, वी वांट 1 स्पीकर फॉर ईच टॉपिक. ओके सर, आई विल स्पीक फॉर यूक्रेन वॉर. बट यू somebody else has already volunteered. No, he has. He was the one. अच्छा, you are the one. Then don't stick to that topic, please. Okay. We'll give this to someone else. Anybody for this? That Imran Khan? Yeah, okay. If you're not Imran Khan, Pakistan, whatever.
Nobody is coming for. Okay, change the topic. You can take a very light topic. अपना topic choose कर लो. The Hey, 4 volunteer. volunteer can choose his topic. So can I talk on IPL? IPL. Yeah, which is ongoing. Oh yeah, The Indian sure. Premier League. Sure. Something Dr. different. Tejas on IPL. Okay, done. So 4 of you are final, and you are going to speak right in the meeting. The entire camera will be on you, and introduction, body, और उसमें आप ध्यान रखेंगे वो physical stance का वो सब रहना चाहिए. And we would preferably like to see you in full size and not sitting on a. Okay. Sir, how many minutes? Vilas sir. The time, Time 3 minutes each. 3 minutes. Which is introduction and body both. Yeah. Okay. And of course, conclude. Don't say ki you didn't tell. Conclude. You conclude in your style. In your. Okay. Okay. Sir, I want to tell you something. Now. Yes, please. Joshi. Yeah. You're Sir, mute, good ma'am. evening, sir. Please tell. Am I audible? Hello. Yeah. I am Varsha Joshi, President-elect of Rotary Club of Nasik Road for 22-23. सर मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम है. एक्चुअली आई एम अ सिंगर. मैं जब गाना गाती हूँ माइक लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्टेज पर अगर कुछ बोलना है तो बहुत प्रॉब्लम्स लगते हैं सर. हाँ, पर आप एबनॉर्मल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है मैडम. ये बहुत ही नॉर्मल है. You know, Lata Mangeshkar was such a poor public speaker. She was Saraswati when it came to Ghana. Yes. But when it came to speaking, and not that she was nervous or something, but her voice quality was not good for public speaking. Okay. Yeah, she was not at all impressive as a speaker. And even so, ये होता है, but that doesn't mean that you should not attempt. So you know what you do is basically experiment with yourself. Okay. And without having any benchmark, आप किसी से compare मत करिए अपने आप. Don't compare yourself with anyone. Right? Understand you're attending this course. Go through it completely. Yes. Experiment with yourself. Yes. और आप क्या are you married? Yes, sir. Yes. So you can ask your husband to give you his inputs. और उनके सामने में आप 4-5 तरीके के speeches दीजिए. Okay. You know, let him tell you how did he feel? How did he speak? Actually, sir, frankly speaking, उनके सामने और भी नहीं बोल पाती हूँ. क्यों? वैसे तो आप डांटती होंगी, चिल्लाती होंगी, I'm sure. You must be. तो और कोई friend हो, कोई भी हो. Yeah, okay, yes. Doesn't matter. I mean, if you're feeling awkward in front of your husband, okay. You ask any friend who's a well-wisher of yours. Okay, sir. Yeah. Ask and take help and evaluate yourself. Yes. Okay. Okay. पर आप इसको बिल्कुल मत डरिएगा. ये इसी क्या है? There are 2 types of public speakers. कोई है जैसे जो अपन बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, gifted. But ऐसे बहुत कम रहते हैं. करोड़ों में 1-2 ऐसे रहते हैं कि भाई उनको नींद से उठा दो तो वो भाषण दे देंगे बढ़िया. But most of the others have learned it. They have acquired this skill. So this is a skill which can be learned and acquired. And you see, objective is not to become a fantastic speaker. Objective is to become effective speaker. Effective, right. Get my point? So to be effective, what are those various things which I need to understand and develop? Okay. This course is all about that. Effective public speaking. Yes. Not impressive, not bombastic, not fantastic, no. Yes. Okay, so I'm sure you'll be able to get over this. Thank you. But keep involved. Do not run away from it. Yeah. And tomorrow's topic is COVID है या नहीं, right? You're going to speak? Yeah, on this. Volunteer? Yeah. Okay. Yeah, she has. So very good. We'll get an opportunity to hear you. And COVID है या नहीं? This is the topic, sir. Thank you. Okay. आप medical doctor है क्या? No, sir. By profession, actually, I am a lawyer. Okay. Yeah.
but now I'm working in our own factory. We have our own factory at Ambad. Okay. So, Yeah, look forward. So I was wanting to share with you, एक मैंने भाषण सुना था, देशभक्ति पे थे, ये भाषण था, और वो वक्ता जो थे ना, वो आए स्टेज पे और वो बोले, मराठी में था, so I hope all of you will understand and bear with me. उन्होंने टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस किया, एकदम स्टार्टेड ऑन अ बिग, बाळ गंगाधर टिळक कोण होते मला माहिती नाही, वीर सावरकर कोण होते मला माहिती नाही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोण होते ते मला माहिती नाही, ऐसा करके 5-6 नाम लिया बड़े बम्बास्टिक इसमें, एंड देन ही सेड पण मला माहिती आहे की एक गोष्ट, हे सर्व देशभक्त होते. इतना इफेक्टिव वो ऑडियंस वाज, एकदम, आई वाज इन द ऑडियंस आल्सो एंड स्पेल बाउंड, बिकॉज कोई कहता है कि आई डोंट नो हु वाज बाल गंगाधर तिलक, और वो देशभक्ति पे भाषण देने के लिए आया हुआ है, तो नेचुरली यू एक्सपेक्ट ना कि कुछ तो भी, देयर इज मच मोर टू कम. So that was also a very nice way of introducing the topic. So think of ways and ways in which you can make your audience come to you in the first 2-3 sentences. I'm repeating that because that is the main emphasis for today's training. Introduction कैसे करना, विषय का introduction कैसे करना, और बॉडी पे हमने केवल एक ही बात आपको अभी बताया हूँ, वो है कि अपन स्पीच क्राफ्टिंग करेंगे फिर, कि 3 मुद्दे, मेन मुद्दे होने चाहिए आपके भाषण में. So कल जब आप बोल रही है मिसेस जोशी, we will be evaluating from this point of view कि आप वो 3 मुद्दे को अच्छी से समझा पाइए ना लॉजिकली कि नहीं. Okay. So for example, let's say आप अभी कोविड है गया कि है, इस पे आप बोल रही है, जी. So just brainstorm कि what will be your 3 main points. Yes sir. क्या रहेगा? First of all, कोविड अभी गया नहीं है, but it's a fact sir कि कोविड अभी गया नहीं है. तो ये मेरे को नहीं बताना, आप भाषण जब दे रही है तब आप स्टार्टिंग में अगर बोल दिए कि कोविड गया नहीं है. नहीं सर, स्टार्टिंग में I'm just telling you कि मतलब कुछ पॉइंट ले सकते हैं. No, even I know that, but what I'm saying is कि think about how you will come to this conclusion कि कोविड गया नहीं है, तो आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, मैं क्या बोलोगे आप, कौन से 3 मेन मुद्दों को बोलेंगे? Well, now I just can't tell you sir. Okay, think about it. No pressure. Okay, so that's it from me for this evening. Anyone, any questions, please be free to ask, like any issues related to public speaking. Thank you. Can we stop the screen sharing so that visible in a bigger frame? Yeah. Okay. Anyone wants to ask anything? Any questions? Anyone, please don't hesitate to ask. सब लोग सब समझ गए. अच्छा, वेरी गुड. पर शबीर, वाकई आई मस्ट अप्रिशिएट कि कल का जो अभी जो वीडियो क्लिप्स देखा ना, तो कल के जितने मुद्दे थे आप भी देखो उसको बारकाई से, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों ने काफी समझ से उसको इम्प्लीमेंट किया है, which is very good. And I hope you have got your notepads with you and you have taken notes of today's session also. Don't depend on YouTube and others. ये आप जो लिखोगे वो ज्यादा आपके दिमाग में घुसेगा बजाय कि जो देखोगे और सुनोगे. So please write down those important points and work on it. Yeah, Prakash, you want to ask something? Prakash? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप बॉडी में 3 पॉइंट होने चाहिए. हाँ, मेन मुद्दे. हाँ, मेन मुद्दे होने चाहिए, तो वो मुद्दे डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सर? देखो, मैंने आपको बताया ना, फंडामेंटली लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए उसमें. अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये कोविड गया कि नहीं गया, ये विषय है. अब उसमें आप इंट्रोड्यूस करने के बाद में मेन मुद्दे पे आते हैं, तो मेन मुद्दे पे आने के बाद में आप पहले कौन सा बताओगे कि कैसे रिलीफ हो रहा, सब तरफ शादियां हो रही, मास्क नहीं पहनना पड़ रहा, गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया वगैरह, बड़ा रिलैक्स्ड वाला है. सेकंड, फिर भी पेपर्स में क्या सुनाई दे रहा, क्या जितनी केसेस यहाँ हुई, केसेस वहां हुई,
इंटरनेशनल मोदी जी ने नोटिस भेजा कि है कि नहीं, मतलब आपके स्टेट में पेशेंट की संख्या बढ़ रही। हाँ, तो ये वाला सेकंड मुद्दा हो गया। एंड थर्ड मुद्दा विल बी you will try to establish therefore COVID has not gone. Okay. So first is the relief, that is everybody is experiencing that. Okay. मास्क पहन के नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कितना मस्त लग रहा है, नॉर्मल लाइफ चालू हो गया। अभी शादियां, बैंड बाजे, बारात क्या धूम से हो रहे हैं वगैरह वगैरह। Then second will be कि फिर भी नेशनल एंड इंटरनेशनल रियलिटी क्या है। And the third point will be, therefore, it looks like कि COVID is still not fully gone, and we need to take caution. मतलब सर उसमें फिर है कि नहीं, अपने को जो फाइनल बोलना है थर्ड मुद्दे में वो होना चाहिए, ऐसा बोलना है क्या आपका? मेरा कहना यह है कि आपका स्पीच लॉजिकली डेवलप होना चाहिए। तो पहला लॉजिक क्या है कि आनंदमय वातावरण है, एवरीबडी इज एक्सपीरियंस जी, पर उसके बावजूद दूसरे पॉइंट पे हम ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सब तो रियलिटी है, बट साथ में ये भी रियलिटी है कि केसेस बढ़ रही है, कहीं कहीं पे ज्यादा हो रही, चाइना में इतना हो गया जी, है ना। जी सर। अब थर्ड लॉजिकली देयरफॉर आपका कंक्लूजन आएगा कि ऐसा ये हो रहा है कि ये वेरिएंट जो उसके बदलते जा रहे हैं, ओरिजिनल कोविड-19 इज म्यूटेटिंग एंड न्यू वेरिएंट्स आर कमिंग बट इट हैज नॉट गॉन। जी सर। कंक्लूडिंग विल बी कि देयरफॉर टेक कॉशन वगैरह वगैरह गवर्नमेंट का जो कुछ है। जी सर, है ना। थैंक यू सर। तो आपको बेसिकली ये समझना चाहिए कि वो तीन मुद्दे जो है ना वो लॉजिकली वो आइडिया को डेवलप कर दीजिए। जी सर। ओके, अपर्णा जी। अपर्णा जी। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अपर्णा मरावर, रोटरी क्लब ऑफ नासिक स्मार्ट सिटी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मैं लिख पाती हूँ अच्छे से, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। नहीं, आपका तो मैंने वीडियो क्लिप देखा। हाँ, वो 2 मिनिट का ठीक था। बट जब 15 मिनिटाचं जेव्हा भाषण असतं तेव्हा मी पूर्ण पॉइंट्स कव्हर नाही करू शकत, म्हणजे बिना वाचता किंवा असं मी प्रेझेंट नाही करू शकत। तो हे बघा, वाचणं हा काही गुन्हा नाहीये, पण वाचत म्हणजे नुसतं वाचतच नाही राहायचं। नाही, नुसतं वाचणं नाही, पण मला पॉइंट्स चेक करावे लागतात माझे नेक्स्ट पॉइंट साठी। आणि 15 मिनिटाच्या भाषणात पॉइंट चेक करावे लागले तर काही हरकत नाही, काहीच वावगं नाही। मी तुम्हाला फक्त स्मार्ट तरीका शिकवीन की ते पॉइंट्स कसे नोट करायचे। ओके, ठीक आहे। मग मी उद्याचा माझा एक टॉपिक माझा घेऊ का? माझं स्वतःचा उद्या जर मला बोलायचं असेल तर माझं स्वतःचा एक वेगळा टॉपिक घेऊ की आजच्या टॉपिक मधनं एक सिलेक्ट करू? उद्या आपण He is not amongst the 4 volunteers, sir. She is not in the 4 volunteers. No. अच्छा. So we can have a 5th one with a topic that she wants. Oh yes, no problem. घ्या ना तुम्ही तुमच्या आवडीचा विषय। ओके, थँक्यू। Vilas Babu, she is Marawar sir's daughter-in-law. अच्छा, अच्छा, नाइस टू मीट यू। थँक्यू सर, थँक्यू। तुम्ही नाशिकला असता? हा, मी नाशिकला असते आणि लास्ट इयर पण मी तुमचं हे सेशन अटेंड केलं होतं, जे मला खूप आवडलं आणि त्यामध्ये माझ्यामध्ये पण बराच मला प्रोग्रेस जाणवला। तर आणखी मला जास्त छान चेंजेस माझ्यामध्ये हवे होते, म्हणून मी यावेळेस पण हे सेशन जॉईन केलं। थोडंसं याच्यामध्ये काय होतं, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग मध्ये ना जे एक प्रत्यक्षात फिजिकली मनुष्य करू शकतो ट्रेनिंग इफेक्टिव्ह, तेवढं होत नाही, म्हणजे त्याच्या लिमिटेशन्स आहेत। बरोबर। So, but anyway, I'm sure you'll pick it up. तुम्ही उद्या जरूर ट्राय करा, टॉपिक योर ये, and concentrate on developing a very nice introduction and the main body of the speech. Okay, ठीक आहे सर, थँक्यू। थँक्यू। ओके, then टॉपिक काय राहील तुमचा? मी आता विचार नाही केलाय, पण एखादा फनी इव्हेंट किंवा असं काहीतरी बोलायचा प्रयत्न करेल जे बॉडी लँग्वेज पण चांगली सांगू शकेल आणि मी कनेक्ट होऊ शकेल। ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी मैंने आपको बताया हाथ ऐसे पकड़ना, तो इसकी वजह से जेस्चर्स किसी के भी नहीं हुए, ऐसा हाथ जो पकड़ा था। अब कल के भाषण में बॉडी में जो आप बोलोगे उसमें मीनिंगफुल जेस्चर्स भी हम ऑब्जर्व करेंगे, प्लीज यूज देम। ओके, उद्याचा टॉपिक हा लाईव्ह मला बोलायचा आहे ना?
व्हिडिओ पाठवायचा नाहीये. नाही सगळ्यांना 5 जण लाईव्ह बोलतो. ओके. अपर्णा जी, आप रोटरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी देती है. जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Okay then, folks. Good night and see you Good tomorrow. night. Thank you so much, sir. Thanks a you. lot, Vilas Bhai. Good night. Good night. Bye. आनंद सर, मी याचा रोटरी रिलेटेड टॉपिक घेऊ की काय, म्हणजे कुठला टॉपिक घेऊ असं तुम्हाला वाटतं? कुछ भी. मी काय सजेस्ट करू शकता का? अच्छा, आपका चॉइस. थँक्यू. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. थँक्यू सर.